today's session is Yoga reveals this. What is this? State of illumination is proportion, directly proportional to state of realization of truth. What is illumination? You see the bulb, it illuminates, our vision increases. We are able to see. In the same way, something illuminates our ear, we start observing the object through sound waves. Then through the nose, with the help of smell, illumination, we observe the object of smell. Through the taste, there is next illumination. Through the taste, we observe the object of taste. Through the touch, asperse. The touch illumination, it brings realization of object. Therefore, we have different state of realization. That is called partial realization of truth. That is not complete. One try to use your mind with the help of power of mind. What we analyze, what is the truth, that is partial truth. Illumination through the power of mind brings realization of limitation, limited truth. Then let us have the logic. Try to eliminate yourself, realize truth with the help of logic, duality, comparison. We realize truth in the limited form. But when we have true illumination, then we realize ultimate reality. True illumination is called Nirvikalpa Samadhi. This is called Nirvikalpa Samadhi. This brings realization of ultimate truth. What is the ultimate truth? That God alone exists. God is indivisible. If God alone exists, when you feel divided between me and you, there is space. This division is not possible because God is indivisible. God alone exists. What about the sky? What about different structures? Moon and sun and stars and galaxies and plants and animals. Among these creations, there is a space. This space brings understanding of numbers. 1, 2, 3, how many trees, how many animals, how many human beings. This number represents division. Therefore, we try to understand through numbers, this is illusion. Let us see. This is India, border the Pakistan. One side is Bangladesh, one side is Tibet, Nepal, one side is Lanka. What is these boundaries? There is no boundary. We have created boundary. We imagine that both nations are two. If child is born, do not tell child that who is India, who is Lanka, who is Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, who is America and Canada. Newborn baby have no concept. Therefore, we teach children division, separation. Ultimate truth is this: whole cosmos is one body. Whole cosmos is one body. Whole cosmos is one unit. Whole cosmos is one home. Whole cosmos is one element. This is the ultimate truth. Moment you realize ultimate truth, then we cannot criticize anyone. We cannot have doubt in anyone. If you have doubt, if you criticize, it means you do not realize the things. If suppose that something is here invisible, we don't see it. This is thought, invisible. Then this thought has become energy. Many energy we cannot see. This is the visible energy and invisible energy.
then it has become atoms. Do you think that thoughts you can separate from visible, invisible energy? No. Energy is always with the thought, inseparable. Energy is always one with the atom molecules, inseparable. You cannot separate energy from atom. You cannot separate energy with the thoughts. If this is continuity, thought, energy, atoms, molecules, then this is called the continuity. There is one body. As you start from toes, keep on moving. You will find up to the head it is one body. Therefore, truth is this: the whole cosmos is one, undivided, indivisible. That is called God. If you are criticizing anyone, you are criticizing God. That is called inappropriate lifestyle. If you say anybody, you are weak, then you are not understanding God is not weak. Oh, but he is weak, he is not working. Okay, all right, mountain is weak. Mountain is not moving like air. Ice, block, and water, both are equal force, equal power. Therefore, try to tune your mind and reasoning that the whole cosmos is one body, is one structure, indivisible. That is called presence of God. Therefore, Buddha achieved the highest success in the life. Buddhism is spread up to Iran, Iraq, up to Thailand, up to China, Japan, everywhere. Up to Bangkok, everywhere you see Buddhism, Buddhism, Buddhism. Why? In that this was only one teaching. Try to criticize no one, blame no one, never have any negative idea about anyone, have right vision to appreciate each and every things, have right hearing, appreciate each and every sound waves, have right action with the arms, try to work so that bring unity, right walk, try to walk to bring the unity, right thinking, try to think, bring the unity. Try to earn for living to bring the unity. Therefore, in the teaching of Buddha, you will not find any concept of Brahma, Vishnu, or Shiva, any god or goddess. If you are serving me, I say, oh, it is because of God you are serving. This is not true. Truth is that God has become your presence. Yes, God is serving, but you are my God. Therefore, remember, when you practice Kriya Yoga sincerely, then you will have this experience. Therefore, Lahiri Mahasaya, what he said, my worship is strange. In my worship, there is no Ganga water. In my worship, there is no flowers. In my worship, there is no worship of deities or God. In worship, what Lahiri Mahasaya experienced? Completely something, supreme vacuum, fully charged with power. Mahashunya. Mahashunya means? Shunya means this. What is the Mahashunya? This is Shunya. Bigger Shunya, bigger Shunya, bigger Shunya. Keep on expanding the size of Shunya. And Mahashunya means, oh, no limit. There is no circumference. There is no circumference and center is everywhere. And that is full of knowledge, full of peace, full of joy, full of power. That is what Lahiri Mahasaya experienced. Therefore he said, my worship is strength. I do not use the Ganga water. I do not use flowers. I do not have any deities. I do not have any God, nothing. Just what I worship, that is the Kriya Yoga meditation. That when we feel, I feel everything so enlarged. Enlarged, there is no word. We can say enlarged one existence, having no boundaries, but centers everywhere. And from Lahiri Mahasaya, this wisdom transferred to Swami Yukteswar Giri.
From him it came to Paramahansa Yogananda. How much I have love, devotion in my Guru, Samik Teshwagiri. Same love and devotion I have for you. Due to this love and devotion, I am able to serve. If you have no complaint, it means you have 100% devotion, then you can serve anything. You can promise to serve anyone, that anyone will be in a position, experience no problem at all. No physical illness, sickness, mental tension, worries, or lack of anything. Therefore, this Kriya Yoga reveals the state of illumination. Sometimes we want to see what I see, that is the truth. Okay, all right, this is truth. But this is little truth. What I hear is truth. Okay, all right, correct. But this is little truth. What I taste, this is truth. What I smell is truth. What I touch is the truth. When I walk from here to here, I know the space, that is the little truth. That is a limited realization of truth. And what is the ultimate realization? When you have Nirvikalpa Samadhi, what is Nirvikalpa Samadhi? That is called Kaivalya state. What is the Kaivalya state? Unification. What is unification? All are one, no space, no distance. But through the logic you cannot feel it. Power of mind you cannot feel it. Power of senses you cannot feel it. And what you have to do? Criticize no one. Never say anybody is weak. Never say anybody is bad. Never say there is sin. Never say there is a sinner. Practice only one thing. Feel head to toes. It is presence of God, and serve plants, serve animals, serve human beings. What kind of service you will give? To protect their existence, to give them what they need, to protect their form. Type of food, type of drink, type of living place. You have to provide for plants, for animals, and for all. This is the way of life, and never miss the practice. Whatever you know the practice, just practice more and more. One day you will be rich in practice. One day you will realize you can practice all the time. This is important things. After this we are going to practice Kriya Yoga few minutes. अच्छी तरह से याद रखिए कि जो इल्यूमिनेशन कहते हैं, आंखें खोले, आँखों से देखे, यह है विजुअल इल्यूमिनेशन. आँखों के द्वारा जो देखे ठीक है, वही सच है ये, लेकिन अंतिम सच नहीं है. और थोड़े सच से काम नहीं चलता है. कान से सुने सच है, लेकिन यह अंतिम सच नहीं है. नाक से गंध की अनुभूति सच है ये. जीवा से स्वाद ये भी सच है. स्पर्श क्रिया ये भी सच है. मन से सोचे, बुद्धि से सोचे, ये भी सच है. लेकिन इस सच से काम नहीं चलता है. ये सीमित सच है. हमें तो पूर्ण सत्य चाहिए, जिसको कहते हैं अल्टीमेट ट्रूथ, जिसको कहते हैं वो सच जिसको पाने के बाद हमें कुछ चाहिए ही नहीं. उसी को कैवल्य अवस्था कहते हैं. उसी को ट्रू इल्यूमिनेशन कहते हैं. पूर्ण जागृति हो गई. इसी को निर्विकल्प समाधि कहते हैं. ये बड़ा आसान है, बता दूं. आप चाहते नहीं हैं. अगर आप चाहते हैं तो अभ्यास करिए. इसी समय से सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभव कर रहे हैं, इसकी अनुभूति इतना करिए कि किसी की निंदा ना हो सके, किसी की बुराई ना कर पाए. जैसे जैसे एकाग्रता स्वरूप में बढ़ाएंगे, जैसे जैसे श्वास की अनुभूति करेंगे, जैसे जैसे भ्रूमध्य दर्शन करेंगे, जैसे जैसे सिर से पैर की उंगली तक अनुभूति करेंगे, इस अनुभूति को स्वीकार करें. यही ज्ञान है जो हम खोजते हैं, वो किताब में नहीं मिलेगा. इसी ज्ञान की अनुभूति कर रहे हैं. जो शक्ति हम भोजन में खोजते हैं वो सीमित है. इसको अनुभव करके जिसमें हमारी अनंत भक्ति होती है, जो शक्ति मिलती है विराट होती है. जो हम आनंद खोजते हैं कहीं और, स्वरूप की अनुभूति करके इसको जब स्वीकार करते हैं, निराकार परब्रह्म इस रूप में है, जो आनंद मिलता है विराट है. ये परम आनंद है.
और जो शांति मिलती है परम शांति है, जिसका अभ्यास करके देखिए। आपको अभ्यास हम देने जा रहे हैं, हमारे साथ करिए। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, याद रखिएगा। इसे जो लोग कहते हैं सब सही है, कितना सही है? थोड़ा सा सही है, ज्यादा नहीं। उतने सत्य से काम नहीं चलता है। हमको तो पूर्ण सत्य चाहिए। पूर्ण सत्य के लिए हमें निर्विकल्प समाधि चाहिए, ट्रू एलिमिनेशन चाहिए। ये कैसे मिलेगा? यूनिफिकेशन, सबसे जुड़िए। सबसे कैसे जुड़े? बड़ा कठिन है। सिर से पैर की उंगली तक इसी में पूरा ब्रह्मांड है। जो कुछ बाहर देखते हैं इसमें है। अपने से जुड़ना सीखिए तो ब्रह्मांड से आप जुड़ जाएंगे। ज्ञान होगा कैसे जुड़े, पेड़ पौधों से, जानवर से, सभी प्रकार के लोगों से। लेट अस डिसाइड अगेन, रिमेंबर इट। आवर एम इज हैविंग ट्रू इल्यूमिनेशन, दैट इज निर्विकल्प समाधि, दैट इज कैवल्य, दैट इज परफेक्ट यूनिफिकेशन। We have to practice complete unification with all. How to practice with all? Within head to toes, all exist. To try to feel head to toes more and more. Have this thought: we are experiencing all within. All animal kingdom, plant kingdom, galaxies, solar system, everything. All human kingdom, past, present, future of all creations we are experiencing in this way. Practice 5 minutes, 6 minutes, 10 minutes. By practicing more and more, one day you will realize you can enter into Hiran Lok to touch the feet of Swami Yukteswar. You can enter into causal universe to touch the feet of Lahiri Mahasaya. You can go beyond physical, astral, causal universe to become one with the Parabram. Everything is very simple, but you have to practice. Now we are ready to practice. आइए हम आपको अभ्यास कराते हैं। आंखें हम बंद कर ली। Let us close our eyes. सिर से पैर की अंगुली तक स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाएं। स्वरूप अनुभव करें। इसी अनुभूति में ब्रह्मांड की सभी रचनाएं, जितनी रचनाओं के बारे में हम कल्पना कर सकते हैं, वह सब इसी अनुभूति में विद्यमान है। इन रचनाओं का अतीत और इन रचनाओं का भविष्य, सब कुछ की अनुभूति हम कर रहे हैं। सिर से पैर की उंगली तक इस रूप में। कीपिंग आईज क्लोज्ड, फील हेड टू टोज, presence of head to toes, changes within, we feel. It is presence of all creations. All creations of physical universe, astral and causal universe, with their past, present and future. Have this idea, thought and concept, and feel head to toes more and more. Presence of head to toes is presence of perfect creation, complete things. अब दोनों हथेली को हम
सिर के पीछे रखें। नाउ प्लेस बोथ palm on the posterior surface of head. इस समय अनुभव करें सिर से पैर की अंगुली तक, आंख बंद रखते हुए भ्रूमध्य पर एकाग्र हों। भ्रूमध्य के सामने, माथे के सामने जो दिखाई पड़ रहा है, इसमें भी एकाग्रता बढ़ाएं। श्वास अनुभव करें और सिर से पैर की अंगुली तक सब में एकाग्रता बढ़ाते जाएं। और जो भी अनुभव हो रहा है, सभी प्रकार की ये अनुभूतियां, जो भी अनुभव हो रहा है, इसी अनुभूति में सब कुछ विद्यमान है। भौतिक जगत की रचनाएं, सूक्ष्म जगत, कारण जगत, इन रचनाओं का अतीत, वर्तमान और भविष्य। तो सिर से पैर की उंगली तक इस अनुभूति को हम पूर्णत्व की उपस्थिति स्वीकार करें। फिर हाथों को ऊपर उठाएं, रेज आर्म्स अप, मुट्ठी बंद करें, खोलें, क्लेंच फिस्ट, ओपन पाम अल्टरनेटली। हाथों को ऊपर नीचे करें, मूव आर्म्स अप एंड डाउन। हाथों को मोड़ें और फैलाएं, फोल्ड आर्म्स, ओपन आर्म्स। सिर से पैर की अंगुली तक सब में एकाग्रता बढ़ाते जाएं। इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ अवेयरनेस, कंसंट्रेशन ऑन हेड टू टोज। फील हेड, फेस, नेक, आर्म्स, बैक, चेस्ट, एब्डोमेन, बोथ लेग्स मोर एंड मोर। सिर से पैर की अंगुली तक सब में एकाग्रता बढ़ाते जाएं, अनुभव करते जाएं। जो भी अनुभूतियां हो रही हैं, इसकी महिमा अनंत और असीम है। जो अनुभव कर रहे हैं, इसी अनुभूति में सब कुछ विद्यमान है। जितनी रचनाएं भौतिक जगत में हैं, सूक्ष्म जगत में, कारण जगत में, ये सभी रचनाएं और इनका अतीत भविष्य भी इसी अनुभूति में विद्यमान है। इसलिए इस अनुभूति को हम पूर्ण अस्तित्व के रूप में स्वीकार करें। अब दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें। प्लेस बोथ palm on the posterior surface of head. सिर और रीढ़ को धीरे धीरे ऊपर की तरफ इस प्रकार उठाएं, ऊपर की तरफ खींचाव करने में अच्छा लगे। और इसी समय ब्रह्मांड के ऐसे स्वरूप को देखें जहां कोई परिधि नहीं, सरकमफरेंस नहीं। Try to feel head and spine, placing palm on the both posterior surface of head. Our palms are present, are touching posterior surface of head. Feel head and spine. Try to elongate it, increase its vertical length. At the same time, visualize infinite. Visualize creation in such a vast way, there is no circumference. Keep on going up, we will never find any circumference. Try to move towards right, towards left, or down beyond earth. Keep on moving, you will realize absence of circumference. Such vast, this creation is one unit. दाहिने और बाएं पैर को कड़ा ढीला करके अनुभव करें। Try to feel right and left leg tense, relax and feel. फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, रेज बोथ आर्म्स अप। दाहिने और बाएं हाथों को कड़ा ढीला करके अनुभव करें। Tense, relax right and left arm and feel their presence. Try to move arms up and down slowly. हाथों को धीरे धीरे ऊपर नीचे लाएं। फिर दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें। Again place both palm on the posterior surface of head.
Curve head and spine towards right, left, backward, forward for one aim to increase more and more comfortable changes everywhere in all over head to toes. सिर और रीढ़ को इस तरह से धीरे धीरे दाहिनी तरफ, बाईं तरफ, पीछे की तरफ, आगे की तरफ मोड़े, झुकाएं। कैसा करने पर सिर से पैर की उंगली तक सभी जगहों पर जो परिवर्तन प्रकट हो बहुत अच्छा लगे। इसी सावधानी के साथ हम धीरे धीरे दाहिनी तरफ, बाईं तरफ झुकने का, मोड़ने का प्रयत्न करें। दाहिनी तरफ, बाईं तरफ, फिर धीरे धीरे पीछे की तरफ, आगे की तरफ। इतना याद रखेंगे कि इस तरह झुकाएंगे कि झुकाने में परिवर्तन बहुत अच्छा लगे। As we practice curving of head and spine towards right, left, again practice head and spine, try to bend it backward, forward with the same precaution. During bending, we must feel more comfort than before. We will have successful practice when we realize during this bending, comfortable state is increasing. ये अभ्यास सफल कहा जाएगा जब हम मोड़ते समय, झुकाते समय जो परिवर्तन हो, ऐसा लगे आराम की तीव्रता बढ़ रही है। सिर से पैर की उंगली तक सब में एकाग्रता बढ़ाते जाएं। पूरा अस्तित्व की उपस्थिति, निराकार परब्रह्म की साकार उपस्थिति है। माथे के सामने जो देख रहे हैं बंद आंखों से, वह भी निराकार परब्रह्म की साकार उपस्थिति है। श्वास के विषय में भी यही विचार। Feeling head to toes, experiencing each and every point of head to toes, and breath and observation of sound waves. We listen when ears are closed. फिर हाथों को ऊपर उठाएं। अगेन रेज आर्म्स अप। इस तरह से थिंक करें, सोचें कि ब्रह्मांड में कहीं बाउंड्री नहीं है, पूरा ब्रह्मांड एक यूनिट है। रेजिंग आर्म्स अप, हैव दिस थॉट, देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो बाउंड्री इन द कॉस्मोस। द होल कॉस्मोस इज वन यूनिट, अनडिवाइडेड। रिलैक्स आर्म्स, हाथ ढीला करें। श्वास की अनुभूति के साथ साथ कान बंद करके हम ध्यान के स्टैंड के सहारे भी कान बंद कर सकते हैं, और बिना ध्यान के स्टैंड के भी कान बंद करने पर जो सुनाई पड़े अनुभव करें। यह भी ये वो ज्ञान है कि ध्वनि तरंग नहीं है। इसमें ऐसा एकाग्र हो जाए जो अपना अस्तित्व जो भी है लगे कि इस आवाज के साथ ऐसा एक हो गया है। ऐसा लगे कि स्वरूप का अस्तित्व केवल ये ध्वनि तरंग जो सुन रहे यही हो गया है। ऐसी स्थिति में पता चलेगा संपूर्ण ज्ञान जग जाता है। Now close ears, observe various vibrations, various sound waves.
इस तरह हम बार बार अभ्यास करें, लाइक दिस प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। एक दिन हम अनुभव कर सकेंगे क्रिया योग ध्यान हम हर समय कर सकते हैं, कोई भी काम कर रहे हो या आराम कर रहे हो। By repeated effort in practice, one day we will realize that we are able to practice Kriya Yoga all the time. Have double breathing followed by stretching relaxation. With this visualization, there is no boundary. Cosmos is one unit. 2 बार में श्वास और प्रश्वास का अभ्यास करते हुए फिर उसी चित्र को याद रखें। पूरा ब्रह्मांड एक यूनिट है, कहीं बाउंड्री नहीं है, कहीं डिवीजन नहीं है। लेट अस बाउ डाउन टू आवर डिवोशन वी है इन क्रिया योगा मेडिटेशन। क्रिया योग में अपनी भक्ति को नमन करें। अब हम बैठेंगे। नाउ वी विल सिट।